Hello friends, welcome to my YouTube channel Maths Circle, and this is your host Manoj. Today we are going to learn one more important chapter of mathematics, that is called exponent and powers. So without wasting time, let's get started. A raised to the power b. So here a is known as base, or it is also known as radix, and b here is known as exponent. And how this whole combination is raised, a raised to the power b. This is how we'll read it. And this whole combination is known as power. This whole is power, and whatever the answer will come, see, this is called the result of this power. Means a raised to the power b is completely known as power, and whatever the answer will come, that is known as the result of this power. Understood? Now, basically, what the exponent means? Exponent means how many times the base is going to multiply by itself. Exponent means how many times a base is going to multiply by itself. Means एक जो बेस है वो अपने आप से कितनी बार गुणा होने जा रहा है, मल्टीप्लाई होने जा रहा है, उसे ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं. लेट मी गिव यू द एग्जांपल. सपोज मैं लिख देता हूँ 2 raised to the power 4. इसका मतलब है 2 जो है अपने आप से 4 बार गुणा होने जा रहा है, 4 बार मल्टीप्लाई होने जा रहा है, और इसका आंसर आप सभी जानते हैं 69. आप समझ गए? एक्सपोनेंट मीन्स एक बेस अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा. तो 1 2 3 4, 1 2 3 4. The 2 is multiplying by itself 4 times. That is why we had the power of 2 raised to the power 4. Clear it is? Okay. Now, basically, the question will come: how to convert a number into the exponential form? If we will write any number into this form, अगर हम किसी नंबर को इस बेस और पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बहुत आसान. आप सबने ये क्वेश्चन किए हैं पहले, मैं आपको बताता हूँ. सपोज ये कोई भी क्वेश्चन है हमारा 48. सपोज 48 को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 48 के पहले हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर देना है. हम सब ने किए हैं छोटी क्लासेस में. 48 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, और फाइनली ये हमारा 1 आएगा. अब तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम 48 को कैसे लिख सकते हैं? हम 48 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. ये 1 नहीं लिखा जाता, तो ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48. अब इन प्राइम फैक्टर्स में 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4. हमने लिख दिया 2 raised to the power 4, और ये मल्टीप्लाई 3 एक ही बार हो रहा है, तो या तो 3 ऐसे रहने दीजिए, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा ही है तो पावर 1 लिख सकते हैं. Clear it is? This is how we can convert any number into the exponential form. Got it? ऐसे अब आपको क्वेश्चन कई बार दे देता है कि सपोज छोटा नंबर ले लेते हैं, जहाँ स्पेस का में बोलते हैं 18/6. 8/16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो सिंपल, जैसे हमने यहाँ पर किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे ही यहाँ पर करेंगे. 8 को अलग से कर देंगे, 16 को अलग से कर देंगे. तो 8 का हम करेंगे तो आपको पता है 2 4 2 2 और अगेन 1.
सेम ऐसे ही हम 16 का करेंगे तो 2 8 2 4 2 2 एंड 2 एंड 1 देन प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती होगी, ये मैं सोच के कर रहा हूँ। उसके बाद 8 की जगह हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, कोई डाउट इसमें? 16 के हम फैक्टर्स लिख देंगे, क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। देन अब हम इसके एक्सपेंशन फॉर्म लिख देंगे। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। 2 is multiplying by itself 3 times, so 2 raised to the power 3 and नीचे 4 times 2 raised to the power 4. So this is the exponential form of 18 upon 16. This is how we have to do. ऐसे ही हमें करना है. This is how simple this is. Okay. Now you know that how we can convert a number into the exponential form. Now vice versa. How to do the opposite one? Now changing the number again from exponential form to the simpler one is called standard form. Okay, the normal number is always it's called in the standard form. So suppose the question is 2 raised to the power 3. So the question is we have to convert 2 raised to the power 3, that is the exponential form, into the standard form. How to do? 2 raised to the power 3 means we can multiply it 3 times because the power is 3. Now simply we have to multiply all these 3. 2 into 2 into 2 means 2 4 the 2 to the 4 to the 8. So our answer is 8. Now 8 is the standard form. Okay, 2 raised to the power 3 is exponential form and we had converted this into the standard form. Okay, so this is how we can convert standard form into exponential form and again exponential form into the standard form. So but there is a problem. If you have to convert the negative integer into the standard form, let's see how. If we have suppose minus 2 raised to the power 3, in this case what we have to do, we have what? Minus 2 and minus 2. Here we have to take care of the sign also. Now as we learned in the integer, what if there are odd number of negative sign while doing multiply and divide, the answer will get also negative. So 1 2 and 3, there are 3 negative integers we have, so our answer will be negative. Okay, now अब हमें सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है 2 to the 4 to the 8, so we have negative 8. क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर 3 थे और 3 एक ऑड नंबर है, इसीलिए हमारा आंसर भी नेगेटिव है. Okay, you got this? I hope you had learned this one. So up to now we had learned about exponent and powers. I had explained you what is exponent, what is power, how to convert a number into the exponential form, and again exponential form into the standard form. I hope you're not having any kind of doubt in this. If you are finding this channel informative for you, so please like, share, and subscribe for following my more videos. Till then, thank you. Bye bye.